Good evening, everyone. Welcome to Crack Red Week Current Affairs session. First of all, can someone tell me whether my voice is clear and is this screen clearly visible to all of you? काफ़ी लो आवाज़ कम है क्या? Or is it fine? Let me check. So I'll speak a little bit louder. Okay? No issues. So we'll be starting and doing current affair from 21st to 25th July. Okay, and again, at the cost of repeating myself, again, I'll be completing ESI finance business news, or specifically the banking news, and the most important ones. Any other news which are usually one-liner news. If you feel any doubt, feel free to ask me either via mail or doubt session. Okay? Tell me, Arka. Here only. Reports for May and June. Reports with respect to what? Chalo. So the first news is Reliance Industries get US not to import oil from Venezuela. So as all of you understand that Venezuela, a lot more crisis, economic crisis as well as political crisis is going on over there. So a lot more US sanctions are also imposed on that country, and a lot more, oil companies or different nations cannot do trade with the Venezuela country, despite Venezuela having a lot more oil reserves. If you compare with other oil producing companies, उसके पास इतने reserves हैं, ठीक है, but तब भी वो trade नहीं कर पाएगा because of US sanctions and a lot of these things. So that's why even if you want to trade, if any country or any company of any other country want to trade with Venezuela with respect to oil, तो उसको US की permission लेनी पड़ती है. So that's what the news is all about. So Reliance Industries got the permission to import oil from Venezuela. Okay. So you can see Reliance was the second largest buyer of Venezuelan crude oil, following CNPC, which is a Chinese company, despite US sanctions. So that's what the whole thing is. Next news is with respect to Indian economy and its prospects in context of economic survey. तो economic survey वाला जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो बस वहां तक पहुंचने ही वाले थे, तब तक चैप्टर खत्म कर दिया. Because obviously people were having a lot more lectures on that day, I understand. But if you see what did economic survey predicted for India's GDP growth rate for this financial year, which is financial year 24-25, this is the growth rate, 6.5% to 7%. तो उनको लग रहा है 6 से 7% के बीच में इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करने वाली है. एंड इफ यू कंपेयर दिस स्टेटिस्टिक विद वेरियस अदर एजेंसीज that gave the statistic. तो for example मैं आपसे 2-3 agencies का data पूछूंगा. Tell me if you guys do remember, what did Reserve Bank of India gave projection for India's GDP? What was the projection of IMF also, as well as what was the projection of ADB? Please do tell me, and I'm only talking about financial year 25. Yes, correct. RBI का आप लोग एकदम सही बोल रहे हो, 7.2%. What about IMF and ADB? पिछले क्लास में ही पढ़ा हम लोगों ने. You were talking about this. Yes. है ना? So just remember this, and that's it. और अगेन मैं आपसे वही सेम चीज बोल रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूशंस जो हम लोग यूजुअली उनकी जो फ्लैगशिप रिपोर्ट्स है, फॉर एग्जांपल आईएमएफ की फ्लैगशिप रिपोर्ट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. So such kind of predictions of those flagship reports becomes important from the exam perspective, not only in context of phase 1 but also phase 2, or mostly objective only.
ठीक है, डिस्क्रिप्टिव को तो आप ये डेटा यूज करके यू कैन टॉक अबाउट इंडियाज पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आप वहां पर यूज कर सकते हो इसको. Okay, so Chief Economic Advisor V. Anantha Nageswaran, also remember this person in news. Okay, he was leading the economics division in the Department of Economic Affairs. He was the lead author of the survey, and he was also talking about that the corporate sector is swimming in excess profit, and he asked corporate sector to take responsibility of generating productive jobs. And apart from that also, the government is constantly asking corporate sector to do what? This you can talk in descriptive terms, or descriptive में बहुत जगह use हो जाएगा. What does government want corporate sector to do? Anyone? Which government work continuously doing since the past 3 to 4 years? मतलब CSR तो उनकी चलो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें तो खैर बोलना ना बोलना बात बराबर ही आपको करना ही पड़ेगा. Yes, Aarti, correct. Capital expenditure. So recently, since 2020, you can say government was actually in lead in context of capital expenditure. Government की भी एक limit है with respect to expanding or doing capital expenditure. So what government is asking, as well as even the chief economic advisor or the author of this economic survey was saying to the private sector that you also need to take responsibility with respect to capital expenditure. And that's why you see a lot more private big companies and their target with respect to capital expenditure. आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा ही होगा that Reliance was thinking about doing 1 lakh crore capital expenditure for 10 years. Similarly, Adani also doing that. Tata Steel also doing that. Even Jindal Steel Works also doing the same thing. So that's why those capital expenditure news becomes important for phase 1 GA. उसमें वन लाइनर की तरह अगर आएगा प्राइवेट कंपनीज का तो आ सकता है. अदरवाइज दैट गवर्नमेंट डेटा प्रेजेंटेड इन द बजट एज वेल एज सर्वे, तो वो तो एनीवेज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्राइवेट कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में, कंपनीज आई एम सेइंग, एंड दैट इज नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, उनके कॉन्टेक्ट में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली न्यूज थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, नॉट द रेस्ट ऑफ द न्यूज. फिर MOUs इज अ डिफरेंट थिंग. इज दिस क्लियर? और फिर बिजनेस न्यूज में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बैंकिंग न्यूज, तो उसमें फिर मर्जर वगैरह या फिर एक्विजिशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ CA. और फिर ये करेंगे तो ऑब्वियसली जॉब क्रिएशन विल बी डन एंड फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज विल आल्सो बी इंक्रीज्ड. ठीक है, सो इज दिस क्लियर? एनी इशू? चलो, नेक्स्ट इज SIDBI टू बिल्ड $1 billion फंड फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग. ठीक है, विद 215 million फ्रॉम GCF. तो SIDBI का एक प्लान है, they want to create a $1 billion corpus for financing mitigation and adaptation projects of medium and small enterprises. और उसमें से जो चंदा इन्होंने इकट्ठा किया फ्रॉम SIDBI's corpus और प्लान 1 billion and that to dollars only. ठीक है, डॉलर में बात चल रही है, कोई हल्के फुल्के की बात नहीं चल रही. $1 billion फंड फॉर मिटिगेशन एंड adaptation projects. ठीक है, medium and small enterprises. Where $215 million came from GCF. Now the most important thing apart from obviously this news and the data, इसके अलावा फिर और भी चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपको पता हो कि ये GCF है क्या, which is also important in context of that it is related to your sustainable development chapter in ESI. So what is GCF? Or the abbreviation obviously says Green Climate Fund. Who's the custodian of it? Anyone? मतलब किसके पास रखा रहता है ये फंड?
Yes, Manav, correct. Green Climate Fund is the full form. But what about who's the custodian of it? Yes, Vijay, correct. World Bank. So Green Climate Fund was established under the aegis of, मतलब ये किस ग्लोबल कन्वेंशन के अंडर बनाया गया है? Answer is within the name itself. Yes, correct. इसमें डाउट वाली क्या बात है? UNFCCC. Now, last thing. It was established in the year 2010, and this fund will obviously fund projects for mitigation, adaptation. Is mitigation only or adaptation only? बताओ. क्या केवल मिटिगेशन के लिए फंड देगा, अडेप्टेशन के लिए देगा, या दोनों के लिए देगा? सपोर्टिंग बोथ. अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? What was the news saying? The news was saying financing mitigation and adaptation projects. तो दोनों ही आएंगे, isn't it? वो तो न्यूज में ही है. And what is mitigation and adaptation? To all those people who are there in the course, mitigation और adaptation का difference भी फट से बता दो. When we talk about steps to tackle climate change, we not only do mitigation, we also do adaptation. तो जब मिटिगेशन की बात करते हैं मतलब किसी चीज को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट में ऐसा क्या रिड्यूस कर रहे हैं जिससे क्लाइमेट चेंज कम हो जाए? द रीजन बिहाइंड क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, दैट मीन्स ग्रीन हाउस गैसेस. तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिससे ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस हो जाए, या फिर जो आ सकती थी वो ना आए. दैट्स व्हाई यू डू एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स. फॉर एग्जांपल EVs, increasing carbon sink, all those things, isn't it? Afforestation. Yes, correct. All of you are correct. बहुत बढ़िया. और adaptation में क्या हो गया? You build infrastructure or you build systems that can, stay resilient in front of impact of climate change. अब climate change का impact क्या होता है कि साइक्लोन आ गए बड़े खतरनाक. तो आप सिस्टम्स ऐसे बनाओ कि आप उस वाले एनवायरमेंट में तमीज से रह सको. You build resilience within yourself. ठीक है? So that's what the news is all about. आप उस चीज को बड़े अच्छे से याद करके रखना. UNFCCC, ठीक है? And this $215.6 million. Next is NMDC prepares to double capacity by 2030, and this is a business specific news talking about a company called NMDC. उनका 100 million ton iron ore production का target है by 2030. Nothing else more than that. Next we go to regulatory body news. So the first news is SEBI enables credit rating agencies to give ratings in gift city. और ये सिंपल सी बेसिकली चीज क्या है? फॉर एग्जाम्पल दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, एनीवन, एनी एग्जाम्पल? 2-3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का एग्जाम्पल पकड़ाओ. क्राइसिल, मूडी, फिच. हाँ ठीक. ये लोग क्या करते हैं?
ये लोग रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं नॉट ओनली फॉर द कंपनीज बट ऑल्सो दे प्रोवाइड रेटिंग्स ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल कंपनीज। कोई म्यूचुअल फंड कितना अच्छा काम करेगा या फिर कोई भी एसेट क्लास कितना अच्छा काम करेगी, वो सारी रेटिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। अब गिफ्ट सिटी में बहुत सारी कंपनीज इस तरीके से एस्टैब्लिश हो रही है, दे आर ऑल्सो लॉन्चिंग देयर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ थीमेटिक फंड्स। So SEBI has done what? It has enabled these credit agencies to even rate these products also that are located in gift city. बस इतनी सी बात है, ठीक है, विच वॉज नॉट देयर प्रीवियसली। अब उनको भी अलाउ कर दिया है कि अब गिफ्ट सिटी के अंदर जितनी कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट्स को भी आप रेट कर सकते हो। इज दिस क्लियर? एनीथिंग एल्स? एनी कंफ्यूजन? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। Now let's move on to the next news, which is about a RBI report regarding labor quality. So RBI says labor quality improved by 0.7% per annum over the last 4 decades. Very much important news. RBI की रिपोर्ट है, तो मैं आपको कंटिन्यूसली बोलता रहूंगा, कोई रिपोर्ट नहीं छोड़नी आरबीआई की अगर आप आरबीआई का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे एक सिंपल सा लाइन क्यों ना हो, यू रिमेंबर इट। सो फ्रॉम 1980s till 2022 labor quality is improving 0.7% per annum, ठीक है? Now what do we mean by labor quality and what are we really talking about when we talk in context of labor quality? तो labor quality के बारे में what can you talk about people? एक सिंपल सा आदमी है, आदमी जब यू नो वर्कफोर्स में काम कर रहा है, दैट मीन्स ही इज परफॉर्मिंग सम एक्टिविटी, परफॉर्मिंग सम वर्क, सो यू विल बी टॉकिंग अबाउट क्वालिटी इन दैट वर्क ओनली। तो इंसान की क्वालिटी आप किस तरीके से डिटरमाइन करते हो? इन टर्म्स ऑफ इट्स यूसेज इन वर्कफोर्स, मोर स्किल्ड, क्वालिफाइड, वेरी गुड, यही तो यूटिलाइजेशन है, ठीक है? तो स्किलिंग, क्वालिफिकेशन, हर साल लेबर हमारा कितना क्वालिफाइड आ रहा है, कितना स्किल्ड आ रहा है, और उसकी इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ स्किल्ड लेबर कितना एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग। तो अगेन आई एम सेइंग 0.7% पर एनम की बात कर रहे हैं। द रेट even though is not so much impressive, but whatever the case may be, you guys should remember कि this is the quality increase per annum we are talking about, ठीक है? ये मत कर देना कि 4 डेकेड में केवल 0.7% बढ़ा स्किल, ठीक है? तो that will not be logical and all, so would be so much incorrect, ठीक है? This is per annum we are talking about. What is the next thing? So if you see that the labor quality grew by 0.72% every year between 80 till 2000. However, after that it grew only 0.6% in the last 20 decades. So क्या बोल रहे हैं वो लोग कि अगर आप 40 साल का डेटा देखोगे, 4 decades, so we are technically growing at 0.7% per annum. But if you break it down and if you check 20 years at a time, so at this point of time we grew at 0.72% per annum, and in this time we grew only at 0.6% per annum. तो आप ये डेटा कहां पर कंपल्सरीली यूज करेंगे? बिल्कुल यूज करना है आपको, फिर ऐसे डेटा मिलेंगे नहीं बार बार। वेर यू गोना यूटिलाइज दिस डेटा? एनीवन इन डिस्क्रिप्टिव, वेर यू गोना यूटिलाइज दिस? अनएम्प्लॉयमेंट,
अनएम्प्लॉयमेंट में कैसे आप यूज करेंगे? चलिए ठीक है, बट टेंजेंशियली तो आप चलो कर सकते हो। स्टेट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, अरे आपको स्किल्ड वर्कर क्यों चाहिए? आप ओवरऑल इंडिया के लेवल पे सोचो कि व्हाई डू यू नीड स्किल्ड वर्कर्स एट दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली फॉर दीज 20 to 30 years। क्यों चाहिए आपको? बिकॉज यू वांट टू रीप डिविडेंड ऑफ योर डेमोग्राफी। तो आप लोग इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड में बिल्कुल मेंशन करेंगे कि इंडिया इज अंडर यूटिलाइजिंग इट्स डेमोग्राफी। और आप ये वाला फिर स्टार्ट लिखना कि पिछले 20 साल में केवल 0.6% पर एनम के रेट से इंडिया के लेबर की स्किल बढ़ रही है, विच इज वेरी डिप्रेसिंग अपार्ट फ्रॉम वट एवर इज हैपनिंग इन नाउअडेज। ठीक है, so this you're gonna write it over there, demographic dividend challenges में। ठीक है, तो आई होप यू गाइज विल बी एबल टू रिमेंबर 0.7% 40 साल में, 0.72 फ्रॉम 1980 टिल 2000, और फिर उसके बाद से 20 साल 0.6%। So the paper name is Measuring the Contribution of Labor Composition in Gross Value Added India, the Human Capital Approach। ये पेपर था जिसमें ये सारी रिपोर्ट्स आई हुई थी। चलो, नेक्स्ट इज आरबीआई रिवैम्प द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विसेज। सो बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट और ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी बेसिक केवाईसी के रिक्वायरमेंट्स है उसी में थोड़ा टाइटनेस दिखा दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड द रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डोमेस्टिक ट्रांसफर पेमेंट्स। तो कैसी कैसी रिस्ट्रिक्शन है? जस्ट इफ यू सी, द रेमिटिंग बैंक शुड ऑब्टेन एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द बेनिफिशियरी फॉर कैश पे आउट। सो बेसिकली थिंक अबाउट ए बी। तो जैसे मैं हूं, मेरे को ये पेमेंट करनी है टू बी, तो ए विच इज अ बैंक, if it is doing a cash payout to this person, okay, so not only name but even the address of this person needs to be with the bank. So that's what the first criteria is saying, and this is only particularly for the cash payment कि नाम के साथ साथ एड्रेस भी चाहिए। तो नेचुरली वो टेक्निकली आपसे बोल रहे हैं कि अब आधार चाहिए अगर कैश पेमेंट वगैरह लेनी भी है आपको तो। नेक्स्ट इज एवरी ट्रांजैक्शन बाय अ रेमिटर शुड बी वैलिडेटेड बाय एन एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। सिंपल सा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप करोगे तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है। देन वी हैव द डिटेल्स ऑफ द रेमिटर एज पार्ट ऑफ IMPS transaction message must be recorded by the bank which is remitting funds। तो आपको वो तो पता है कि इनकेस अगर NEFT या IMPS ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप लोग आजकल देख रहे होगे जहां कहीं से भी आता है तो वो रेफरेंस नंबर में उस बंदे का नाम भी आना स्टार्ट हो चुका है। आई होप ऑल ऑफ यू इज सीइंग दिस। How many of you have seen this? From wherever you receive money, you also receive the name also of that person or not. So that has also made compulsory. Then we have the details. The remitting bank business correspondent shall register the remitter based on a verified phone number and a self-certified official valid document। कोई भी जो भेज रहा है, अकाउंट है तो ठीक है, बट अगर वैसे अलग से भेज रहे हो तो आपका सेलफोन नंबर, आधार, वो सारी चीजें यू विल बी रिक्वायरिंग, दैट इज ऑल्सो देयर। ठीक है, सो दीज आर सम रिस्ट्रिक्शंस विच यू माइट थिंक कि बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, नॉर्मली जेनेरिक भी आपको लग रही है। ठीक है, बट यही जेनेरिक वाली चीजें आपके सामने वो पेश कर देगा, आपको पूछेगा, इसी में एक एक्स्ट्रा डाल देगा
और पूछ लेगा आपसे कि कौन कौन से रेगुलेशंस आरबीआई ने अभी अभी निकाले हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हम तो जेनेरिकली समझ रहे थे ये सारी चीजें। अब तो पांचवा स्टेटमेंट भी मेरे को जेनेरिक लग रहा है और सही लग रहा है, तो फिर आप उसमें एलिमिनेट कैसे करोगे अगेन? सो दैट्स व्हाई वट एवर इज मेंशन्ड ओवर हियर, प्लीज cram it what exactly we were talking about. Cash payout, additional factor of authentication, details of remitter, and lastly even verified phone number as well as official document of the remitter also. These four things. Is this clear? Any confusion in this? Chalo. Now let's move on to the next news, which is over 70% of the intraday equity traders face losses in 2023 fiscal year. एंड दिस इज द डेटा एज पर सेबी, और ये आप लोगों ने क्रैक ग्रेड बी के चैनल पे सर ने स्क्रीनशॉट भेजा था, उसमें भी देखा होगा कि कितने सारे ट्रेडर्स अपना पैसा लूज करते हैं। ये स्टेटिस्टिक तो बहुत सारे लोगों को पता है कि इवन इक्विटी मार्केट्स में भी 95% ऑफ द पीपल लूज देयर मनी, और ट्रेडर लॉस में ही है, किसी ने प्रॉफिट नहीं कमाया। सो दैट्स अ बिग थिंग। और मोस्टली सो व्हाट आर दे ट्राइंग टू से टू यू कि थोड़ा कॉशियसली आओ मार्केट में, इसको इस तरीके से सोच के मत आओ कि क्या कहते हैं कि सोने का पेड़ लगा हुआ है, पैसा डालेंगे तो बस खूब पैसा मिलेगा। नॉट लाइक दैट। गैम्बलिंग, इट्स नॉट गैम्बलिंग, ठीक है? यू रिक्वायर टेक्निकल नो हाउ, यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज टू अर्न मनी इन द स्टॉक मार्केट, एंड डोंट कम विद wrong expectations of earning 100% returns, 200% returns within a same year. सेफ रिटर्न लेके होप एक्सपेक्टेशन लेके आओ कि क्या कहते हैं 10-15% तो आपको चलो म्यूचुअल फंड वाले दे ही देते हैं, 15 से 25% आप थोड़ा सा भी पढ़ पढ़ा के यू कैन ईजिली अर्न, बट डोंट हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ मोर देन 25%, क्योंकि अगर उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके आओगे तो ये होगा आपके संग, यू विल बी जस्ट अनदर स्टेटिस्टिक इन सच काइंड ऑफ डेटा बाय सेबी। तो अगर आपको स्टेटिस्टिक नहीं बनना है तो ये रिपोर्ट एक बार पढ़ो, which says that more than 70% of individual intraday traders in the equity cash segment have incurred losses in the 22-23 fiscal year. Again, be very specific, more than 70% intraday traders की बात चल रही है, जो उसी दिन पोजीशन लेते हैं, उसी दिन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, है ना? और equity cash segment में। So the surge of over 300% in the number of individual participating in intraday trading is 3%, 300%, sorry। मतलब आप पिछले साल के कंपेयर करोगे, if you see 21-22, तो उससे कंपेयर करके the number of participants increase 300%. Around 1 in 3 individuals who trade in the equity cash segment trade intraday, ठीक है? तो 33% इंट्राडे ट्रेडर्स है, फिर उसके बाद ऑब्वियसली यू हैव वीकली ट्रेडर्स, मंथली ट्रेडर्स उस सेंस में, और फिर इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलते हैं। लास्टली, शेयर ऑफ यंग इंट्राडे ट्रेडर्स हैविंग एन एज ऑफ फीवर देन 30 years has grown to 48% in 2022-23। तो ये जो इंट्रा ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, विच इज 33.33% ऑफ द टोटल प्लेयर्स, उसमें अगर आप talk about people less than 30 years, 48% of the people are there. उन्होंने क्या बोला कि ये मान लीजिए टोटल प्लेयर्स, इसमें से 1/3 आर इंट्राडे ट्रेडर्स, जिसमें से 48% आर व्हाट पीपल बिलो एज 30। तो बढ़िया है, इसको अपने क्या कहते हैं परसेंटेज के प्रॉब्लम की तरह याद भी रख सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वांट की भी प्रैक्टिस हो रही है सीए के साथ साथ, है ना? देन द परसेंटेज ऑफ लॉस मेकर्स अमंग यंगर ट्रेडर्स वाज 76%। बाप रे बाप। तो अगेन इस 48% का भी 76% मेड लॉसेस इन दैट फाइनेंशियल ईयर।
So you can remember in this manner. Is this clear? I hope the news is clear to all of you. चलो आगे बढ़ते हैं. Next news is RBI cancels license of Mahabharat Cooperative Urban Bank, Tezpur. बस single liner news है. And because of poor financial health, RBI took this decision. Next is net credit card additions down 48% to 2 million in Q1 as per Reserve Bank of India. Again I'm saying, जब एग्जाम पास आ रहा होता है तो हम लोग थोड़ा जो इंपॉर्टेंट क्वार्टरली डेटा भी है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, बिकॉज समटाइम्स अब वही है ना कि जब दिन खराब है तो फिर वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन इस तरीके के. यूजुअली साल भर का आता है डेटा, बट एग्जाम से जस्ट पहले क्वार्टरली डेटा, इवन जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट है सर उसका कंटेंट देंगे, वो भी आपको जो एग्जाम के जस्ट पहले वाला है विच इज अगस्त ओनली, अगस्त का स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट एक बार पढ़ के चले जाना. सो as you can see, the net credit card additions witnessed a decline of 48%, which is very huge if you compare the quarterly data on a year-on-year basis. और reason क्या है? Seasonal factors are also there, but regulatory restrictions, which is RBI increasing risk weight norms in credit card. RBI ने risk weight कितना बढ़ा दिया? Does anyone remember? How many of you remember? What is the risk weight for whatever amount of credit does when bank provide under credit card? कितना risk weight है? और recently change किया था सरकार ने, sorry RBI ने. Take a guess at least. हाँ सही बात है. ये सेम चीज किसी और सेगमेंट के लिए भी किया था. व्हाट वाज दैट सेगमेंट? यस. तो ये आप कमर्शियल बैंक टू एनबीएफसी के लोन के कॉन्टेक्स्ट में 125%, क्रेडिट कार्ड के कॉन्टेक्स्ट में 150. ठीक है, चलो. नेक्स्ट न्यूज इज अ लिटिल बिट रिलेटेड टू, मतलब कि व्हाट इज हेल्पिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन फिस्कल कंसोलिडेशन. सो एज यू कैन सी, सही सी बात है, सबको पता ही थी कि आरबीआई डिविडेंड पे आउट इज हेल्पिंग गवर्नमेंट मेंटेन फिस्कल डेफिसिट डिसिप्लिन. ठीक है, क्योंकि उन्होंने इंटरिम में कितना बोला था? 5.1%. अब रिड्यूस करके कितना बोल दिया? 4.9%. Is dividend a debt creating capital receipt or non-debt creating capital receipt? Anyone? बेसिक सा है, मेरा मन किया तो मैंने पूछ लिया आप लोगों से. यस, इट इज नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स. तो आपका डेट बढ़ नहीं रहा, तो आपकी लायबिलिटी भी नहीं है, ना ऑब्लिगेशन है, तो नेचुरली फिस्कल डेफिसिट यू कैन फर्दर रिड्यूस. बढ़िया. चलो, now let's move on to the next, which is cash free payments get payment aggregator cross border license from Reserve Bank of India. So this is again idea वही सेम है पेमेंट एग्रीगेशन का,
but that will also enable क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स. तो उसका लाइसेंस एक कंपनी है कैश फ्री पेमेंट्स, उसको मिला है. So payment aggregator, as all of you understand, what does payment aggregator does? क्या करता है पेमेंट एग्रीगेटर? आप लोग हर महीने पढ़ते आ रहे हैं, किसी ना किसी को तो लाइसेंस मिल ही रहा है पेमेंट एग्रीगेटर का. Similarly, we also study the concept of payment aggregator. What does payment aggregator does? What does it enables? Anyone? थर्ड पार्टी विच फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस बिटवीन मर्चेंट्स एंड कस्टमर्स. यस. और सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है उसका पेमेंट एग्रीगेशन, मोड्स ऑफ पेमेंट्स एग्रीगेशन, कि वो अलाउ करता है मर्चेंट्स को कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट लेने का, है ना, वाया डिफरेंट पेमेंट मोड्स, वट एवर इज कंफर्टेबल फॉर द कस्टमर. ठीक है. और ये इफ यू रिमेंबर इन विच मंथ, अप्रैल के मंथ में पेमेंट एग्रीगेटर का ड्राफ्ट सर्कुलर आया हुआ है, उसमें पेमेंट एग्रीगेटर की डेफिनेशन बड़ी अच्छी से दे रखी है. ऑल ऑफ यू प्लीज क्रैम दैट डेफिनेशन, इट मे हेल्प यू इन डिस्क्रिप्टिव एज वेल. Yes, Konika, correct. This definition I was talking about. And this payment aggregator which Cashfree Payments has received is for even exports and imports. If you want to do export transaction or import transaction via whatever methodology or international credit card or debit card, वो अब Cashfree Payments को license दे दिया. You can do so. This company. ठीक है. तो next time whenever you do any international transaction, you might see PayPal or any other company, especially cash-free payments. चलो, let's move on to the next. SEBI consultation paper proposes swift resolution of intermediary violation or faster enforcement. तो SEBI का एक consultation paper है which talks about violations by intermediaries. So who are the intermediaries in market? Anyone? हम लोग 50 बार डिस्कस करेंगे कि मार्केट इंटरमीडियरीज कौन कौन सी होती हैं. Who's gonna tell me? Market intermediaries, anyone? Clearing corporations, custodians, exchanges, और बस यही आएंगे क्या? I'm not talking about market in, intermediaries institutions, but also all the intermediaries we're talking about. तो broker भी आएगा उसमें. People providing you portfolio management services, financial advisors, all those people. तो सेबी का कंसल्टेशन पेपर क्या कह रहा है कि ये लोग जो वायलेशन करते हैं of different norms or bylaws or regulations of SEBI, that process or that resolution process takes a lot of time or a lot of manpower, a lot of time, a lot of delay happens in that context. So to make that whole process of resolution of such kind of violations, SEBI is trying to propose some simpler norms related to that. Okay, so idea is that only. So up, what are they proposing? So the first thing that they propose is that expedition of resolution time potentially concluding within 50 days. कि 50 दिन के अंदर अंदर आप पूरा रेजोल्यूशन निपटा लो, आपस में सेटल कर लो, कहीं आर्बिट्रेशन करना है, मीडिएशन करना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू,
completed within 50 days. Another thing that they wanted to tell you is violators will have 21 days to respond. उसके बाद सेबी रिस्पॉन्ड करेगा 21 दिन के अंदर, और फिर बचे कितने, 8 दिन. उस दिन के अंदर you just finish it off. Last thing is, this process will not include personal hearings, which further reduces corruption scope, just like what government of India is also doing in context of tax returns and all those filing returns. The key thing is that you remember these 50 days, you remember these 21 days for both parties, and lastly, no personal hearing. और कि मतलब ये what is the idea कि क्यों हो रहा है? Is this clear? Next is RBI imposes penalty of 1.9 lakh on Muthoot Finance for KYC non-compliance. One liner, nothing else. Next is banking news, or let's say ESI news only. EPFO net added 19.5 lakh members in May 2024, the highest since April 2018. तो 6 साल में सबसे ज़्यादा डेटा हम लोगों ने रिकॉर्ड किया. That makes it a little bit important news. So you just remember the month in which it added this much amount of members, 19.5 lakh. ठीक है? The month as well as the female participation also. कि 19.5 लाख में 2.5 लाख और 2.48 lakh new female members added in May 2024, a 12.15% increase. पहली बात तो ये ऑलरेडी कम नंबर है, फिर ये बता रहे हैं कि 12.5% का इंक्रीज है, तो अप्रैल में क्या हालत हुई होगी. दिस टेल्स यू economic inequality happening in the country in context of women labor force participation rate as well as male labor force participation rate. So you can utilize this kind of data to showcase the situation in descriptive as well, but रटना है for objective purpose, so you do that for that also. ठीक है, स्टेट वाइज महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा led the net member additions, contributing 58.24%. So that's what the whole news is all about. Next is PhonePe retains top position on UPI in June in terms of market share. 48% का मार्केट शेयर है PhonePe के पास, Google Pay 36.7% और Paytm 8%. तो जितने भी लोगों ने Paytm का शेयर ले रखा है, थोड़ा देख के again, no wonder a lot more investors of Paytm are, selling their stake. You can see market share of Paytm, it used to be higher, is right now at 8%. PhonePe almost close to 50%. Please remember this. Next is IDBI bank privatization. तो उसके security clearances हो चुके हैं, बस RBI की permission की बात है. So what's the news is, the government of India and Life Insurance Corporation, they both are combining, in combination selling 61% stake in IDBI Bank, जिसमें 30.48% is government of India, 30.24% is of LIC. ठीक है, इतना ये लोग they'll be selling it. So this 61% figure you need to remember. And obviously distribution be almost 50-50% है, so you can just take a look at that. Next is ex-defense secretary's maiden fund achieves first close. तो basically first close क्या होता है, आप एक alternate investment fund launch कर रहे हो for any purpose, तो आप कहीं से पैसा उठाओगे, some investors will be giving you money so that you can use that money and do further different type of investments, whatever your nature of alternate investment fund is. तो first close का मतलब यही होता है कि the day on which all your investors have obligation to pay you that money. जैसे वो नहीं दिन होता है जब आपके पैसे कट जाते हैं in terms of IPO, तो similar in context of alternate investment funds. तो ये फॉरेन फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी थे अजय कुमार, उनका फंड है MGA
Kavach, that has received the money from investors. Next is Cred, unveiled Cred money to track payments. So simple feature, nothing to explain it. Next is Bank of Baroda launches generative AI powered virtual relationship manager and credit line on UPI. Specific banking news, not so much important for RBI exam. RBI में कुछ major digital initiative आ जाता है किसी particular bank का तो important है, but obviously it is important for banking examinations per se. Lastly, RBI approves KVS Manian as a CEO of Federal Bank. Full name Krishnan Venkat Subramanian, ठीक है, as a CEO of Federal Bank. तो ये आप important है, याद करके रखिए. So this is all for today. If you have any questions with respect to any of the other news in these days, आप लोग मेरे से बड़े आराम से पूछ लेना मेल पर या फिर डाउट सेशन में. And if you have any other question, please tell me, otherwise we'll wind up the session. ऋतिक, इसमें ना एक सिंपल सी चीज क्या है, in context of section or penalty, all of you understand whenever you're, if some coaching institute or some any other or some even RBI, if RBI in IBPS asks you under what section is the penalty being imposed on any other bank or any other financial entity, आप मेरे को एक बात बताओ, आप जब RBI की एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो, the annual report lists you top 3 areas or top 3 reasons because of which RBI imposes penalty on different institutions. तो वो 3 रट लो, उसके हिसाब से कैटेगराइज कर लो वो न्यूज. That's it. Because most probably the reason would be KYC, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाले रीजन के चक्कर में मॉनिटरी करी होगी, क्योंकि बड़ी बैंक्स में तो मोस्टली यही रीजन रहता है, या फिर लेट्स से टेक्निकल इरेगुलरिटीज या किसी और रीजन की वजह से. So this you can utilize as a methodology for that context. ठीक है. How many months ESI and FM we have to cover for RB? मतलब ESI FM तो पूरा सिलेबस ही है, तो कवर करना ही पड़ेगा आपको. In context of CA you need to do from June, TIB भी जून से कर लो, अप्रैल से कर लो, 6 months basically. ऋतिक इसके लिए तो क्लास लेनी पड़ेगी. Gurleen, basically think about, whenever you file an application for an IPO, तो ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन एप्लीकेशन पे आपने मैंडेट सेट किया उसी दिन आपको वो शेयर मिल जाते हैं. शेयर एलोकेशन डेट इज अ पर्टिकुलर डेट वेयर इट इज डिसाइडेड हु गेट्स द शेयर, और उसी दिन आपका पूरा पैसा भी ट्रांसफर हो जाता है टू द कंपनी. द डे व्हेन योर मनी goes to that company. In similar fashion, the day when investors' money goes to the fund, goes to the alternate investment fund, this is the day which you call, or this is the event which you call fund close. Okay, or first close, sorry. Yes, sir. CA from June is sufficient. Any other question? Anyone? Nothing? So, thank you guys for joining. We'll meet in the next session. Till then, keep revising these current affairs. Thank you.